हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस अचीवर्स पॉइंट। आज हम फिर कुछ और प्रीवियस ईयर में पूछे गए यूजीसी नेट के पेपर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज अमंग द फॉलोइंग? टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट। सो द राइट आंसर इज फ्रेंड्स टेराबाइट। जो लार्जेस्ट यूनिट है जो दिए गए इस ऑप्शंस में से वो है टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डेटा कैन बी सेव्ड ऑन बैकिंग स्टोरेज मीडियम नॉन एज ए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, बी कंप्यूटर डिस्क रिराइटेबल, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल, डी कंप्यूटर डेटा रिराइटेबल। सो द राइट आंसर इज कॉम्पैक्ट डिस्क रिराइटेबल। Next is, which of the following is the appropriate format of URL of email? ईमेल का जो सही फॉर्मेट है वो क्या है? तो A है www_mail.com, B www@mail.com, C www@mail.com, D www.mail.com. So the right answer is B, which is written as in small www@mail.com. Next is, HTML is basically used to design. HTML किसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है? A वेब पेजेस, B websites, C graphics, D tablets and frames. So the right answer is web pages. A web pages. HTML is basically used to design web pages. HTML को web page को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। Next question is, use of an ordinary telephone line as an internet appliance is called A voice net, B voice telephone, C voice line, D voice portal. So the right answer is friends voice line. Next question is, which of the following statement is correct? नीचे में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Modem is a software. A, B modem helps in stabilizing the voltage. C modem is an operating system. D modem converts analog signals into digital and vice versa. So the right answer is D, modem converts analog signals into digital and vice versa. Next question is, in web search, finding a large number of documents with very little relevant information is termed, यानी कि वेबसाइट में सर्च करते हैं जब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के साथ किसी डॉक्यूमेंट को, तो इसे क्या कहते हैं? ए पूल रिकॉल, बी वेब क्रॉल, C poor precision rate, D poor web response. So the right answer is friends, इसका जो सही आंसर है वो है A poor recall. Next question is, using website to pour out one's grievance is called A cyber venting, B cyber ranting, C web hate, D web plia. So the right answer is cyber venting. जो इसका सही आंसर है वो है वेब रेंटिंग। इसका हिंदी में अर्थ हुआ यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंस इज कॉल्ड। अपने ग्रीवेंस को, अपने दुख को प्रकट करने के लिए जो अगर वेबसाइट का यूज़ किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? साइबर वेंटिंग। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेटवर्क डिवाइस? नीचे में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस नहीं है? ए राउटर, बी स्विच, सी हब, डी CPU. सो द राइट आंसर इज CPU. Next question is, which of the following is not related to the information security on the internet? निम्नलिखित में से कौन सा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंटरनेट पे से रिलेटेड नहीं है? A डेटा इंक्रिप्शन, B वाटर मार्किंग, C डेटा हाइडिंग, D इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. सो द राइट आंसर इज फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन रिट्राइवल. राइट. So friends, this was the video for today.
If you like the video, do share it and do subscribe our channel for next upcoming videos. Thanks for watching.